ये वीडियो है नी जॉइंट पर। Knee joint, it is the largest and most complicated joint in the body. It consists of two main parts, paired condylar joints between the rounded medial and lateral condyles of the femur above and the corresponding condyles of the tibia and the cartilaginous menisci below. Number 2, a gliding joint between the patella and the patellar surface of the femur. Note that the fibula is not directly involved in the joint. So this joint makes by three bones: femur, bone of the thigh; tibia, bone of the leg; and the patella, knee bone. Fibula is not included in this joint. Okay. Now the articular surfaces of the femur, tibia, and patella are covered by hyaline cartilage. Type: the joint between the femur and tibia is a synovial joint of hinge variety. It means there will be uniaxial movement, that is flexion or extension only, while the joint between the patella and the femur is synovial gliding variety. Synovial type of joint but gliding variety. I will examine the anatomy of the knee joint, its articulating surface, ligaments and neurovascular supply. So in this joint there are four bursa. Number 1 is suprapatellar bursa. Number 2 is prepatellar bursa. Number 3 infrapatellar bursa. And the number 4 is semimembranous bursa. Suprapatellar bursa, an extension of the synovial cavity of the knee located between the quadriceps femoris and the femur. Prepatellar bursa found between the apex of the patella and the skin. ठीक, ये skin और ये apex of the patella. Infrapatellar bursa split into deep and superficial. The deep bursa lies between the tibia and the patellar ligament. The superficial lies between the patellar ligament and the skin. This is superficial infrapatellar bursa. This is deep infrapatellar bursa. Now the semimembranous bursa, located posteriorly in the knee joint, between the semimembranous muscle and the medial head of the gastrocnemius. So this is also a typical diagram of the typical knee joint. This is posterior cruciate ligament, medial meniscus के साइड पर medial collateral ligament, whereas lateral meniscus के साइड पर lateral collateral ligament, and this is anterior cruciate ligament. इसी वीडियो में आगे आपको एक मॉडल दिखाऊंगी जिसमें भी लिगामेंट्स एंड मेनिस्की वाज़ेह तौर पर दिखाए गए हैं. So there are 4 ligaments and 2 menisci: posterior cruciate ligament, anterior cruciate ligament, lateral collateral ligament, medial collateral ligament, and there are 2 menisci, medial menisci and the lateral menisci. Lateral menisci lateral side पे होगा और medial meniscus medial side. और इससे रिलेटेड जो क्लिनिकल कंडीशन से लाइक अगर कोई पेशेंट आया तो हम बोलेंगे पेशेंट को कि अपनी लेग को लेटरली रोटेट भी करें और मीडियली रोटेट. इफ patient feel pain during medial rotation of the leg, so it indicates that damage of the medial collateral ligament or damage of the medial meniscus. If the patient feel pain during lateral rotation of the leg, so there will be damage of lateral collateral ligament or lateral meniscus. If the medial collateral ligament is damaged, it is more than likely that the medial meniscus is torn due to their attachment. अगर cruciate ligaments डैमेज हो जाए, ये वाले ही anterior cruciate ligaments और posterior cruciate ligaments, अगर ये ligaments हाइपर एक्सटेंशन की वजह से या फिर हम नी जॉइंट को कुछ ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड कर ले, उस वजह से अगर ये लिगामेंट्स डैमेज हो जाएं तो by the application of a large force to the back of the knee with the joint partly flexed. To test for this, you can perform an anterior drawer test. So in last, injury to the collateral ligament, that is medial or lateral, is the most commonly pathology affecting the knee joint.
It is caused by a force being applied to the side of the knee when the foot is placed on the ground. Damage to the collateral ligaments can be assessed by asking the patient to medially rotate and laterally rotate the leg. Pain on the medial rotation indicates damage to the medial collateral ligament. Pain on the lateral rotation indicates damage to the lateral ligament. If the medial collateral ligament damaged, then there will be chances of damage of the medial meniscus because both are attached together. अगर ये बुर्सा डैमेज हो जाए, bursitis हो जाए, इसमें means inflammation हो जाए, then friction between the skin and the patella occur, cause the prepatellar bursae to become inflamed, producing a swelling on the anterior side of the knee. ये जो आप देख रहे होंगे. Similarly, friction between the skin and the tibia one cause the infrapatellar bursa to become inflamed, resulting is what is known as clergyman's knee, classically caused by clergyman kneeling on hard surface during prayer. और एक और भी clinical condition known as unhappy triad means blown knee. As the medial collateral ligament is attached, unhappy triad क्या होता है? As the medial collateral ligament is attached with medial meniscus, damage to either can affect both structures' function. A lateral force to be extended knee such as a rug-by tackle can rupture the medial collateral ligament, damaging the medial meniscus in the process. The anterior cruciate ligament is also affected, which completes the unhappy triad. So in short, knee joint में ligaments होते हैं. एक होते हैं extracapsular ligament, दूसरे होते हैं infracapsular ligament. Extracapsular ligaments are ligamentum patella जो कि patella के साथ अटैच होता है, और lateral ligament, medial ligament, और एक होता है oblique popliteal ligament जो इस फिगर में शो नहीं, और दूसरे होते हैं इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट्स. वो दो होते हैं, ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. ये दोनों लिगामेंट इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट है, while these are the extracapsular ligaments. Now the nerve supply of the knee joint. Nerves. The femoral, obturator, common fibular and tibial nerve supply of the knee joint. Movements is flexion, extension and rotation. Flexion is due to bicep femoris muscle, extension is due to quadriceps femoris muscle, medial rotation is due to sartorius muscle and lateral rotation is due to bicep femoris muscles. So this is the model of knee joint. ये अक्सर ऑस्पी स्पॉट में पूछ लेते हैं, मेडिकल के एनुअल एग्जाम्स में, या फिर वाइवा क्वेश्चंस पे पूछ लेते हैं. तो एटलीस्ट नी जॉइंट अगर मॉडल हो तो हमें लेबल करना आना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से लिगामेंट्स हैं. सो लेट्स मूव. ये देखिए नी जॉइंट की मूवमेंट ऐसी होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जो हम लेग को मूव कराते हैं, थाई और लेग को. ये है एक्चुअली मूवमेंट ऑफ द नी जॉइंट, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. इसमें रोटेशन भी होती है, लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन स्लाइटली. सो गाइस, इट्स एन नी जॉइंट मॉडल. ये इसका एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड, और ये इसका पटेलर लिगामेंट है जो कि पटेला के साथ कनेक्ट होता है, और ये एंटीरियर साइड है. ये हमारा थाई बोन फीमर, और ये तिबिया लेग की बोन. इसमें दो कंडाइल्स हैं, मीडियल कंडाइल एंड लेटरल कंडाइल, और ये तिबिया है, और ये मीडियल मैनस्की, लेटरल मैनस्की. इसमें ये जो है वो पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट, और इस साइड जो है वो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, और ये हमारा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट. देन पोस्टीरियर साइड फीमर, लेटरल कंडाइल, मीडियल कंडाइल, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, lateral menisci, medial menisci, posterior cruciate ligament, anterior cruciate ligament. So guys, don't forget to subscribe my channel, like, comment and share my video. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.